Good evening, friends. Important video from one of the important judgment coming from Honorable Madras High Court. Department was insisting for GST credit reversal on account of input lost during the manufacturing process, natural manufacturing process. And department was insisting that this input lost is falling within the provision of Section 17, subsection 5, clause H of CGST Act, which is goods lost, stolen, destroyed, or written off, or disposed of by way of gift or free sample. Question H. Whether such inputs which is being lost during the manufacturing process, can we say these are being lost or disposed of by way of gift or free sample, which is being contemplated under Section 17, subsection 5, clause H of CGST Act. Laudable judgment from Madras High Court. In the case of ARS Steel, Alloy and International Private Limited. Good judgment. No reversal is required. No GST credit reversal is required on such manufacturing loss, because such manufacturing loss are inherent within the manufacturing process, which is in the course of furtherance of business, and cannot be termed as if goods lost, stolen, destroyed, or written off, or disposed of by way of gift or free sample as contemplated under Section 17, subsection 5, clause H of CGST Act. Very good judgment. I'm taking this discussion further. Sometime we engage ourselves for promotional items to boost our sell, to increase our sell, to penetrate the market. And we provide certain items to our distributor and dealer on achievement of milestone. Can it be alleged, though we are finding divergent advance ruling, contrary advance ruling, that those items are being considered as a gift, hence credit is not available? In my humble submission, gift is voluntary. When you give gift to someone, it is voluntary with no condition. But whenever you are giving some item, you can say gold coin, silver coin, any item which you are offering to your dealer, distributor, supply chain network on achievement of milestone. Why you are giving? To increase, to penetrate your sell. It is in the course of furtherance of business. It is not termed as a gift. I'm not giving as a free will, voluntarily. I've fixed the criteria. I've fixed the milestone. And why such milestone? Just to boost my sell, to penetrate my market, to increase my business in the course of furtherance of business. In my humble submission, such item cannot be considered as a gift as contemplated under Section 17, subsection 5, clause H. Hence, good and laudable judgment from Madras High Court. Summary. Whether GST credit can be demanded as a reversal for such input which is being lost during the manufacturing process. क्या डिपार्टमेंट मुझसे जीएसटी रिवर्सल मांग सकता है उस इनपुट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान लॉस्ट हो गए? In the context of Section 17, subsection 5, clause H of CGST Act. Section 17, subsection 5, clause H क्या कहता है? Any goods lost, stolen, destroyed, or written off, or disposed of by way of gift or sample. तो जो इनपुट
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान लॉस्ट हो गए, क्या वो इस 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में फॉल करेंगे? यही इशू है। और इसके लिए रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ ARS स्टील एलॉय एंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने लाउटेबल जजमेंट दिया। Such manufacturing loss cannot be contemplated in the context of section 17 subsection 5 clause H. These manufacturing loss are natural in the course of furtherance of business. It is not gift or sample. आप इस पे GST क्रेडिट का रिवर्सल नहीं मांग सकते। गुड एंड लाउटेबल जजमेंट। इसी चीज को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो कई बार प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कई आइटम देते हैं। कभी गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, कभी सिल्वर कॉइन दे रहे हैं। तो क्या ये गिफ्ट है क्या? हमें मालूम है कई एडवांस रूलिंग हमारे अगेंस्ट में है, डाइवर्जेंट रूलिंग, पर हमें यह समझना पड़ेगा ये जो मैंने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को दिया, क्या यह फ्री गिफ्ट है? गिफ्ट वॉलंटरी होती है, जिसको आप विथ नो कंडीशन आप वॉलंटरी किसी को देते हैं। उसको तो मैं 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में ले जाऊंगा, जो गिफ्ट फ्री गिफ्ट वॉलंटरीली विथ नो कंडीशन। लेकिन जहां मैं कोई सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा हूं और उससे कहता हूं ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये माइलस्टोन अचीव करोगे। और ये माइलस्टोन मैंने क्यों बनाए? टू पेनिट्रेट माई मार्केट, टू इंक्रीज माई सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या हम इसको गिफ्ट कहेंगे? इन माई हम्बल सबमिशन दिस इज नॉट ए गिफ्ट। दिस इज नॉट ए गिफ्ट। जब आप कोई गिफ्ट फ्री वॉलंटरीली देते हैं विथ नो कंडीशन, बट यहां मैंने जो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन दिए, मैं कब देता हूं? जब वो अपना माइलस्टोन अचीव करता है। और वो माइलस्टोन मैंने क्यों बनाए हैं? टू बूस्ट माई सेल, टू इंक्रीज माई सेल, टू पेनिट्रेट द मार्केट। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी उस प्रमोशनल आइटम को जो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया गया है, आप उसे 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच ऑफ CGST एक्ट लेके नहीं जा सकते। दैट इज नॉट द गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और सैंपल। मेरी सबमिशन, मेरी हम्बल सबमिशन ये होगी, वो सारे आइटम जो मैं अपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टू बूस्ट माई सेल, टू प्रमोट माई बिजनेस, इज नॉट ए गिफ्ट। क्रेडिट मुझे मिलेगी। दैट वुड बी माई हम्बल सबमिशन। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक लाउडेबल जजमेंट दिया कि इनपुट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस्ट हुए, उस पर आपको GST क्रेडिट की रिवर्सल नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज नॉट फॉलिंग विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच लाउडेबल जजमेंट। Thanks for watching. Stay tuned for lot many update on GST. Thank you very much.